So on this auspicious morning तो नहीं evening हो गई है. So on this auspicious evening, I don't know. I mean आज जो चीज़ें आज मेरे साथ हुई हैं, all I can say is I'm lucky or something. I should say that क्योंकि आज क्विज़ हुआ. क्विज़ में मैंने ज़्यादा आंसर्स दिए नहीं. I was not that confident. Anyways, I mean, and I also got the prize in the poster making competition, so for myself. So yeah, I mean, I'm lucky and I'm blessed, and at the same time I was that confident to actually speak on this topic called how I got motivated for physiotherapy. Like, it was using internet, but I couldn't say that in front of everybody. So anyways, coming to my today's topic, how I got motivated for physiotherapy. तो सबसे पहले तो बात वही है, curiosity and at the same time बचपन से रिवर्स इंजीनियरिंग करने का शौक है ही और था ही और रहेगा. So anyways, I mean, I was not a physiotherapist by my choice, but after you will listen to me, you will be like, okay, and definitely you will be like, now you don't sound like a physio, not by choice. So let me start by saying that due to COVID, we were like all struggling. We were just in the very, very bad situation where we were just having bad, and we were just laying. We were as comfortable as possible, and in general we were not understanding what's happening. I mean, that should never happen again, and that didn't happen like in years with us. So it was very difficult to understand anything in general. So I'll start by saying that I actually got piriformis, as for a long term I was just sitting and just consuming content, be it long type of content or short type of content. I was really fascinated by seeing amazing YouTubers. I'll come to that later on. I don't want to go out of the topic. So I actually got piriformis syndrome, due to which I was getting like very mild to moderate back pain, and apparently it was more or less like, it was difficult for me to actually understand where piriformis is. It took me like 1 hour to actually understand. Yeah, it took me 1 hour to actually understand that what's even happening, where it is. Then I got to understand the origin insertion. Then I got to understand, okay, what is the biomechanics of that particular muscle. So the curiosity just took me away, and I was like, okay, that's something really interesting. I mean, इतनी पतली सी muscle and that can cause a pain. And first year निकल चुका था, उसके बाद में मेरे को piriformis muscle के बारे में कोई idea नहीं था. It was like a new muscle to me. So apparently I was like fascinated कि ठीक है, syllabus के बाहर भी थोड़ा पढ़ना चाहिए. वो अलग बात है, syllabus पूरा कभी ख़त्म होता नहीं है. So yeah, I mean, the second point was, भले जितना content देख लें, भले जितना भी जो कुछ कर लें, लेकिन apparently friends and company and environment will actually decide. That will be a factor which is really important, especially for me, where anyways I don't have to say it anyhow. I mean, we just need a friend who just gives you constructive criticism, be truthful to you. That's all. And it's you who make friends, so make your friends wisely. And then comes a point when in COVID I was really not interested. I mean, really not interested for physiotherapy. So apparently I ended up giving up on physiotherapy. I was like I just made this account, Bicky Snaps. I was like, ठीक है, I will be also a photographer because I am from Sagar, and apparently एक famous person जिसका नाम है भटकता एक मुसाफिर, मैंने उससे inspiration लेके I just thought like, okay, I mean, after seeing him, I also can be a photographer. So apparently I just ended up
being a photographer, but I was unprofessional and I will be unprofessional photographer until I want to improve. I mean, I'm not having that much time, but anyways, whatever it is, I just got to understand this simple thing that भले जितना consume कर लें content, end of the day, what will actually matter is how systematically you write in exam, how systematically you know things. क्योंकि जानना और एकदम completely जानना चीज़ों को, like that is a completely two different concepts in itself. And I am a technical person, that's why I'm making this technical video. Like, physios don't understand the value of their phone and they don't use their damn brain. ये मैं line चुरा रहा हूँ, I am witty physio की. So yeah, I mean, it's his line. He motivated me when I was really demotivated for giving my anat का back exam. वो 10 तारीख को, आज तारीख 8 हो रही है. So apparently like just 2 days left. And yes, I mean, he just motivated me a lot, and Twitter पे आता हूँ तब I will talk about it. So yeah, I mean, as I am a technical person and I ended up idolizing a digital person who is like me. So I ended up idolizing Varun Maya, and he just took the VC funding at 20 and stuff. You can Google about him. So I was so fascinated by this idea of Meta University. So that is the thing. And जिस दिन मैंने सोचा कि okay, बहुत हो गया, I just have to stick to something, reading, because reading is something which I never did in my whole 21 years of my life. So I never completed a book, whether it be academic or non-academic. So yeah, I mean, I understood this simple fact that if I want to be a physio, then definitely I have to complete the academic books no matter what. And I just had the right thought process, and क्या पता मैंने बोला हो तो इसने सुन लिया हो तो इसने अच्छे से मेरे को results दिए हो. YouTube recommendation just gave me a video of Varun Maya उसी दिन. अब उसको law of attraction बोल दो, जो बोलना बोल दो, I don't really mind. He just made a video, 5 books which you should read before you die. And अब ले तो ली भैया बुक, लेकिन अब पढ़ना भी तो पड़ेगा. So as I said, it was not easy for me to actually read that book, but I met this girl in my not my girl, sorry, my bad. I met one girl very randomly of VPT only, and when we were just protesting for our exam and stuff. So anyways, I mean, I just don't want to even talk about it, but anyways, I just randomly talked to a physio, budding physio, and नए लोगों से बात करने का बड़ा ज़्यादा शौक है. So I just tried, and apparently got to understand, okay, she's studious, she's super studious, she is good at studies and stuff. So she can manage anyhow to complete that same book in just 1 week, in just 2 days, because it was just 200 pages. So I ended up saying that it will take me 2 months to complete that book. So yeah, I mean, मेरे को शर्म आ रहा है, I mean, but whatever it is, I mean, I just completed that book, and yes, your guy just completed that book in a week, and it was so difficult for me, but बहुत अलग अलग किक मिली and बहुत ज़्यादा स्लैप्स मिले उस बुक को पढ़ने के बाद. So yeah, I mean, that is really interesting. You should also read. You are not so smart if you think you are smart. So yeah, you should have a healthy competition. And coming to the Twitter part, so my Twitter was created in 2013. Yeah, 13. So I don't know how old was I. I just don't want to even calculate it. I just want to complete this video first. So yeah, this is not scripted. Like, these are just points, and I'm just talking about on that points. And scripting हमसे नहीं हो पाएगी, क्योंकि भले हम देख के पढ़ के बोल लेंगे, वो फील नहीं आता. So yeah, I mean,
इस वीडियो में आई गेस कट्स भी नहीं लगेंगे. सो आई मीन कमिंग टू द ट्विटर पार्ट, माई ट्विटर वॉज मेड इन 2013 एंड 2013 में आई वाज लाइक फैसिनेटेड, क्योंकि मैं डिजिटल पर्सन था, हूँ और रहूँगा. सो भले मैं लाइक देयर इज दिस फैक्ट, यू कैन डिजिटली बी अ फिजियो, लाइक एक साथ चीज़ें चल सकती है. दैट्स व्हाई यू आर जस्ट सीइंग दिस वीडियो, सिंपल एज दैट. एंड या आई मीन एज आई हैड दैट थॉट प्रोसेस इन माई माइंड कि मेरे को बस एक आर्टिकल चाहिए था इन संस्कृत. आई गेस इट वॉज मदर टेरेसा. सो अपरेंटली मेरे को मिला नहीं. सो आई वाज लाइक ठीक है, ट्राई करते हैं, शायद ट्विटर से किसी का कैसे को कनेक्शन मिल जाए तो मिल जाए. सो या आई मीन आई जस्ट ended up asking for help, but nobody helped. And मेरे को समझ में नहीं आया था चलता कैसे है, लोग इतना एडिक्टेड क्यों हैं. लेकिन एनीवेज वॉट एवर इट वॉज, वॉट एवर इट इज़, आई जस्ट कैन से दिस पार्ट कि मेरे को सच में डेस्परेशन थी कि मैं ट्विटर चलाना सीख जाऊँ, क्योंकि मेरे को चाहिए था कि मैं अच्छे से मतलब समझ पाऊँ चीज़ें. सो मेरे पास कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, मेरे पास कोई एकदम फिक्स नहीं था इंटरेस्ट कि भाई मैं उस इंटरेस्ट को अपनाऊँ तो आ जाए. पॉलिटिक्स इज़ नॉट समथिंग विच आई एम इनटू. सो आई जस्ट मतलब ये जो कोविड क्राइसिस हुआ, सो उसमें मैं जितना हो सकता था, बुक्स तो नहीं पढ़ता था, लेकिन मैं जितना हो सकता था फिजियोथेरेपी सर्च करके मैं समझने की कोशिश कर रहा था व्हाट इट इज़. क्योंकि स्टिल आई एम फिगरिंग आउट क्योंकि आई नेवर सॉ अ पेशेंट एकदम रिहैब होते हुए. रियलिटी में नहीं देखा, वर्चुअली लोगों को देखा हुआ, टेली रिहैब. एनीवेज आई मीन व्हाट एवर इट इज़, दुनिया में अपडेट्स आते रहेंगे, एकदम टेक्नोलॉजी बढ़ती रहेगी, इंटीग्रेशन रहेगा तभी आएगा मज़ा. सो या आई मीन आई जस्ट एंडेड अप गेटिंग टू अंडरस्टैंड दैट कि ये जो फील्ड है फिजियोथेरेपी, ये ट्विटर पे भी तो सर्च कर सकते हैं. ट्विटर पे क्या लोग लिखते हैं फिजियोथेरेपी के बारे में, मेरे को ये जानने की इच्छा जागरूक हुई. एंड अपेरेंटली आई एंडेड अप रिसर्चिंग लाइक ऑन द डेली बेसिस व्हाट आर द रिजल्ट्स, व्हाट आर द लेटेस्ट रिजल्ट्स, व्हाट आर द प्रीवियसली मोस्ट पॉपुलर रिजल्ट्स ऑन द कीवर्ड फिजियोथेरेपी. सो आई यूज दिस वर्ड कीवर्ड बिकॉज या डिजिटल मार्केटिंग के थोड़े बहुत आधी अधूरी चीज़ें पता है. हाँ, यू विल से कि आधी अधूरी चीज़ें बहुत ज़्यादा हानिकारक रहती हैं, लेकिन आधी अधूरी चीज़ों से ही ये सब कुछ, ट्राइपॉड, माइक, सब कुछ हुआ है. तो आधी अधूरी बातें मेडिकल फील्ड के लिए आधी हानिकारक रहती हैं, लेकिन अगर क्यूरियोसिटी रहती तो आधी अधूरी बात भी पूरी हो जाती है कैसे ना कैसे करके. सो आई जस्ट रिसर्च्ड ऑन दिस टॉपिक फिजियोथेरेपी एंड माई at that particular moment my whole feed was filled with, because I searched this keyword physiotherapy India, and my whole browser was just filled with were filled with PD tweets ma'am, also known as Kruti ma'am. And like if I just didn't pronounce that right, but like huge respect from MP. I mean, I just don't have words even. I mean, क्योंकि talking to a physio, like ये मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन मैंने उन मैम से बात करी. बहुत ज़्यादा चीज़ें जो डाल रखी हैं उनने, हर एक फिजियो, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, बट if anybody is listening to me from around the globe, then you can just search ma'am on Twitter, PT tweets, PT and tweets, TWETTS and underscore होगा तो देख लेना. Anyways, I mean I'm so blessed कि मैं कनेक्ट हुआ उनसे एंड स्टिल कनेक्टेड हूँ एंड फॉरएवर रहूँगा. सो या आई मीन आई वाज सो फैसिनेटेड कि ठीक है भाई, मतलब दिस इज़ समथिंग विच इज़ देयर. आई मीन ऐसी आई नेवर लाइक ये अभी भी मेरे को डाइजेस्ट नहीं होती है बात कि अ फिजियो who uses Twitter and shares the live and anyone can access the thoughts.
सो यही तो चाहिए था मेरे को, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड, एंड माय नोटिफिकेशंस आर ऑलवेज ऑन, उनके जैसे ही ट्वीट आते हैं. सो यार ट्विटर के उन मैम के तो स्पेसिफिकली हैं. सो दैट इज़ समथिंग रियली टच्ड माई हार्ट, एंड मेरे 2 चीज़ें एक साथ पूरी हो गई, फिजियोथेरेपी एंड ट्विटर का क्यूरियोसिटी. सो आई मीन जस्ट बिकॉज अब मैंने इंस्टाग्राम को, मैंने ट्विटर को समझा दिया था कि मेरे को ऐसे ऐसे रिजल्ट्स चाहिए, तो मेरे को वैसे वैसे लोग फीड में आ रहे थे. अब मैं एड्स की बात करता हूँ तो मेरे को आई विल नॉट इवन हाइड एनीथिंग, आई विल बी रियली इनटू दिस थिंग, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग यहाँ तक देख रहे हैं उनके लिए कुछ स्पेशल ही मैं बताऊँगा. सो आई जस्ट had this page called, like I still have it, Clubhouse का ज्ञान. So apparently as I told, मेरे को इतना इंटरेस्ट था नहीं. So Clubhouse was in boon and I just started talking to people, and वहीं से ये फिजियोथेरेपी वाला फैक्टर आता है, इम्प्लीमेंट होता है आफ्टर सेकेंड वेव. So I don't remember her name, but yeah, I mean I just met a physiotherapist सबसे पहले ओवर क्लब हाउस, एंड मैंने उनसे बात करने की कोशिश करी. व्हेन शी जस्ट सेड कि उनका प्रैक्टिकल होता है, एंड लेट मी जस्ट चेक फॉर अ सेकेंड दैट इज इट रिकॉर्डिंग और नॉट. या इट इज. सो apparently I just met her, and over Instagram I just tried talking to her, but I don't know why she didn't replied. I don't expect much from people, but बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि मतलब ऐसी फिजियो मेरे को ज़िंदगी में पहली बार मिली. फिजियो पेज मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा था. आई नेवर इवन थॉट कि ऐसा भी कुछ होता है. मैंने बोला फालतूगिरी होती होगी, लेकिन नहीं, इट वाज सीरियस स्टफ. एंड या आई मीन आई जस्ट इवन टेक्सटेड हर ऑन हर पर्सनल अकाउंट, बट वही है, आई मीन दिस इज़ इंडिया, एंड मेंटालिटी इज़ लाइक अनबायस्ड नहीं हो सकते लोग. सो आई एक्सेप्ट दैट फैक्ट, एंड आई वाज लाइक ठीक है, मेरे को ना अलग से मैं फिजियो अकाउंट बनाऊंगा, एंड आई विल मेक सम कंटेंट समथिंग लाइक दैट, और आई विल जस्ट शेयर माय एक्सपीरियंसेस एंड स्टफ. बट एपरेंटली इट डिडंट वर्क, एंड वही इतनी ज़्यादा चीज़ें डेली बेसिस पे नई चीज़ें आ रही थी. सो या आई मीन इट रियली हैपेंड. एंड क्लब हाउस के ज्ञान पे मेरे को हीरो पल्लवी मैम की ad दिखी in the middle of the story. So I was like, what is this? I mean, what is even that? I mean, क्या ऐसे कुछ हो सकता है? Like I will be like, I was like, will the society accept her? Is the society accepting her? And yeah, like these were my little words. I'm sorry if I am hurting ma'am's or anyone's sentiment, but these are just my true thoughts. And I was like okay, and slowly जैसे रील्स इम्प्लीमेंट हुई, सो शी स्टार्टेड अपलोडिंग रील्स, एंड विच वर सो, मतलब मेरे को तो, मैं पर्सनली अभी बोलता हूँ, मेरे को ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आती, क्योंकि शी इज़ लाइक PG एंड 8 साल का एक्सपीरियंस है. सो ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रोक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों को थोड़ी ना इतना समझ में आएगा, थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है. तो मैंने कोशिश करी स्ट्रोक के बारे में समझने की, सीखने की, लेकिन वो ज़्यादा चीज़ें मेरे को नहीं समझ में आई. सो या आई मीन वॉट एवर इट इज़, रिवर्स इंजीनियरिंग करने का मेरे को ज़्यादा शौक है, तो मैंने स्ट्रोक पार्किंसंस पे बहुत ज़्यादा रिवर्स इंजीनियरिंग की, लेकिन जब तक वो पेशेंट सामने नहीं रहता तब तक वो समझ में नहीं आती चीज़ें. एनीवेज वॉट एवर इट इज़, फिर मेरे को फुल मोटिवेशन मिल गया कि हाँ, अगर मैं कृति मैम को, अगर मैं न्यूरो पल्लवी मैम को फॉलो करूं और उन जैसे लोगों को और जानने की कोशिश करूं, तो डेफिनेटली लाइक माई माइंड सेट विल चेंज, बिकॉज द वे यू कंज्यूम कंटेंट, द वे यू कंज्यूम कंटेंट वैसे आप बन जाते हो. तो आई विल रिलेट पुराने फैक्ट से कि मैं भटकता एक मुसाफिर सर को देख के मैंने फोटोग्राफी चालू कर दी, तो मैंने इनको देख के मैंने थोड़ा पढ़ना चालू कर दिया. एंड देयर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट पर्सन जिनका नाम है माय अराउंड फिजियो. आई डोंट नो, आई मीन मेरे को अचानक से उनका नाम याद नहीं आ रहा. आई एम लाइक इट्स माई बैड, बिकॉज इट इज़ नॉट स्क्रिप्टेड वीडियोज़. आई नो हर फ्रॉम हर यूज़र नेम, क्योंकि उनका कंटेंट इज़ लाइक बोल जाता है. सो या आई मीन she just used to make these live sessions जो इंटरव्यू रहता था
फिजियोस के बीच और स्टूडेंट के बीच, मतलब जो भी क्वेश्चंस रहते हैं एमपीटी से रिलेटेड या कोई से भी किसी सी चीज़ से भी रिलेटेड, फिजियोथेरेपी से रिलेटेड, सो I just used to attend those live sessions and she's really hard working, hands down to her, क्योंकि सिर्फ मैम की वजह से, सिर्फ मैम की वजह से, माय ओन फिजियो की वजह से ही आई एम राइट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, वरना मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता. शी इज़ द मेजर पर्सन, क्योंकि वो रिलेटिबिलिटी वाला फैक्टर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्टूडेंट और पीजी और पास आउट्स में फ़र्क रहता है. सो मेरे लिए रिलेटिबिलिटी इंटू 100 है. सो दैट इज़ द मेन रीज़न आई एम who I am right now. So apparently I just attended all the lives. I tried understanding the different point of view, क्योंकि मैं कभी किसी की सुनता ऐसे किसी रैंडम फिजियो की सुनता नहीं था. सो कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आया कि गोनियोमीटर उनके फर्स्ट ईयर में रहता है, हमारे सेकेंड ईयर में है, एंड हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते नहीं हैं एंड स्टफ लाइक दैट. बट वट एवर इट वॉज, आई मीन जो उनने वीडियो बनाए हैं अलग अलग पैथोलॉजिकल गेट पे, जस्ट बिकॉज ऑफ हर आई एम लाइक वेरी कॉन्फिडेंट कि सिजरिक गेट ऐसे रहता है और बाकी चीज़ें ऐसे ऐसे होती हैं. सो या आई मीन आई just know this very simple fact that law of attraction really worked for me. And कृति मैम को तो मैं ट्विटर के थ्रू जानता था, मेरे को ये भी नहीं पता था कि उनको इंस्टाग्राम पे भी लोग सर्च करते हैं एंड मतलब उनका इंस्टा अकाउंट है. सो आई वाज लाइक ओ माई गॉड, आई मीन वाई डिडंट आई न्यू. एंड मैं जितने ज़्यादा फिजियो से बात कर रहा था उसी वक्त मैं पूछ रहा भी था कि अगर वो क्वेश्चन Q&A कर रहे थे तो मैं पूछता भी था कि what is who is your favorite physio, and apparently हर बार सबसे पहले PT ट्वीट्स मैम का नाम आया. सो yeah, that is something really fascinating and weird at the same time for me, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे थे and I still can't digest that fact. Let me be very honest. Changes are really important, लेकिन मैं मध्य प्रदेश से हूँ, so changes are not really up for, I mean, we are really not up for the changes. I mean, I don't want to even talk about it. So, likewise, I mean, if someone from MP is watching it, tell me, where is IAP MP, where are the videos? I can't find any. चाहे वो women's cell की हो. I mean, I don't want to indulge in it. Anyways, I mean, I don't have much to say now. I mean, this is an uncut video, so let me just so I am Witty Physio was the first person Twitter के through, like he is the only male physio whom I know जो Twitter पे हैं and अपने thought process share करते हैं. And I know very few people, okay? I mean, I know very few people who are into metallic songs. I mean, yeah, I mean, I just follow her on Instagram and I just want to understand कि metallic, he is into metallic song. And मैंने इतना देखा है कि जो metallic वाले रहते हैं, they have this, मतलब मेरे पास नहीं है, तौबा मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं नहीं समझ पाता हूँ अभी तक metallic. Anyways, I'm just going off topic, but yeah, I mean, I am so blessed with meeting all these people. I mean, thank you so much for existing to each and everyone. And सबसे ज़्यादा जो relatability वाला factor था वो तब आया जब मैंने एक ऐसा vlogger देखा जो एम्स भोपाल में ही ऑर्थोपेडिशियन है और व्लॉगर भी एट द सेम टाइम. सो द USP ऑफ दैट पर्सन वाज कि they were more like he was more into good type of editing, and which is like camera wale bhaiya, and I could completely relate to the editing style, and I wish I could meet her someday somewhere. But anyways, I mean, I mean email के through हमारी बात हुई है. So he is the first person जिनको मैंने लंबा email भेजा है. So yeah, it is so difficult to write like
in words it is easy for me to say, and that's the reason मैंने काफ़ी ज़्यादा जिनके मैंने नाम लिए मैंने उनको voice notes ही भेजे हैं. So yeah, it is really difficult to type and really easy for me to make you understand through voice. So yeah, अगर ये कोई स्टूडेंट देख रहा है so उनके लिए बस मैं सिर्फ 2 आखिरी की ये चीज़ें बोलूँगा कि change your mindset, don't just idealize anybody. And the thing which I did wrong was idealization, and yes, idealization is very wrong, and I just did that. I mean, I just used to idealize every physio जिनका मैंने नाम लिया, and I ended up having no personality, and here I am right in front of you. I mean, yeah, I mean, I am who I am, and I accept my inferiorities, and I accept the way I am, and whatever works for you, and love the process of being a physio. I will end up by saying this, that I even got a vlogger who is from Bhopal and who is a vlogger, who is a physio, who is from Bhopal and who is a physio. So yeah, I mean, मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है and बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हुई हैं. सो दैट इज़ द ओनली रीज़न कि मैंने बस अपना थॉट प्रोसेस साफ रखा है, एंड येस, आई get to understand these many new people, and I will keep on meeting new people, and I'm so blessed. I am really happy, and I am really very I mean, I don't have words to even appreciate you guys, and I will end up by saying this ki thank you so much for existing, and thanks for changing my whole mentality, and I hope you get whatever you are expecting, and thank you so much. Have a great life ahead. Bye bye.